about the Chinese AI breakthrough, about the DeepSeek. पूरे वर्ल्ड में एआई चल रहा है। जितना कॉन्फिडेंस में वो ओपन एआई के फाउंडर ने बोला था, इट्स लाइक गरीबी में आटा गीला हो गया। अरे So, सब आया आई थिंक इन द लास्ट 3 years फ्रॉम FY21 to FY24, so revenues, sorry, not 5x, I think revenues have been 9x. So Netweb is the key sole Indian partner, I think, Yeah. of Nvidia. yeah. So what company is doing? I think it is venturing into telecom and data center because that industry is also around. Obviously कि हाँ चल मैं अभी थोड़ा Yeah. पेन इंटर कर लूंगा, बट आगे जाके मेरे को इसमें अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। As of now, there is no particular revenue coming from the telecom sector. तो ये है, मतलब हाँ, इन शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज भी है, चैलेंजेस भी है। नाउ it's up to the people. Hi guys, so we're back with a new Hello. podcast, and I think this week there is a very famous news that's going around about the Chinese AI breakthrough, about the DeepSeek, which is supposedly the competition of OpenAI. Because जितना कॉन्फिडेंस में वो ओपन एआई के फाउंडर ने बोला था, इट्स फ्यूटाइल टू रेप्लिकेट अस, उतने ही कॉन्फिडेंस DeepSeek ने कर दिया जो मॉडल replicate. बनाया, बट अगेन द वैलिडिटी ऑफ दैट मॉडल एंड द कॉस्ट, दैट नंबर दैट आर कमिंग आउट are need to be questioned since it's coming from a country which is well known for its accuracy about the data. So with that sarcasm, I think we're going to talk about this particular news only, and why it is मतलब why should we care, because DeepSeek है, Nvidia का स्टॉक गिरा and all Stock ने those go things. किया। हाँ, so basically शॉर्ट में पहले समझा देता हूँ कि हुआ ये कि DeepSeek जो टेक्नोलॉजी आई, जो इतने कम पैसों में उन्होंने बनाई, तो देयर वाज दिस परसेप्शन चेंज कि पहले जो इतना खर्चा करना पड़ता होगा वैसा लग रहा था लोगों को बिहाइंड द जीपीयूज एंड ऑल, जिसकी वजह से एनवीडिया का स्टॉक कि हाँ, इतना ये भाग हाई गया। वैल्यू चीज है। हाँ, है हाई वैल्यू चीज है, और जिसकी वजह से एनवीडिया बिगेस्ट वैल्यूड कंपनी इन द वर्ल्ड बन गया था। तो दैट नोशन वाज ब्रोक आफ्टर दिस न्यूज ब्रेक कि अभी कम कॉस्ट में भी हो सकता है। सो एनवीडिया की चिप्स शायद इतने ना लगे जितने पहले लग सकते थे, तो उसकी वजह से स्टॉक्स गिरा। And again, but why are we talking about it? Because there is Indian company which is also related somewhere in this. Company is called Netweb Technologies. So I think it's a very key Nvidia partner. So uska bhi stock was we आई seen थिंक कितना कुछ 50% इन वीक Crazy. और सो गिरा था ना। plus there was this result also that the company announced, which was very good by the way. But I think there was this, it's like a अभी बहाना चाहिए कुछ, तो वैसे बिकॉज आई थिंक valuation रिजल्ट्स भी concern वही were टाइम raised. पे आए थे, एंड देन वो डीप सीक का भी न्यूज़ वही टाइम Yeah. पे आया, तो आई थिंक Yeah, so it like a गरीबी में आटा गीला हो गया। अरे So, so I think it was an also spread and stock plummeted by 50% as I think Pratik mentioned. So इस सब में, but I think of course उसके बाद भी थोड़ा stock rebound हुआ था, because I think company also took a con call to clarify the all this matter. वो भी था। That- आई थिंक मैं ऐसे ही देखा, स्टॉक ने सर्किट मारी थी ऐसी, तो 10% की मैंने सही। So this draws to the stock that कि क्या है उसका story and everything, and that's why I think today's podcast is on that itself. So I think before going into the consequences of the current events related to Netweb, पहले ये बता स्टोरी क्या है Netweb का। चलो ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब अभी जैसे अपन देख रहे हैं कि नहीं, पूरे वर्ल्ड में एआई चल रहा है, बट यार एआई को चलाने के लिए यू नीड सर्टन हार्डवेयर, यू नीड सर्टन सॉफ्टवेयर्स, जैसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स हो गए, या हाँ, मतलब अभी अपने मैकबुक से हाँ, तो हम वही, चला नहीं ये सकते। नहीं चल सकता है। जी अपने ओपन एआई जो इन सब ने काम किया, उनके Correct. पास जो सर्वर्स होते हैं वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं, जिसके वजह से दे आर एबल टू सुपर कंप्यूटर्स, हाँ, सुपर कंप्यूटर्स जो बोलते हैं जिसको, जिसके वजह से दे आर एबल टू मेक और डेवलप सच मॉडल्स। तो दैट इज वेयर नेटवेब कम्स इन। मतलब नेटवेब बेसिकली हेल्प्स इन मेकिंग दोज सुपर कंप्यूटर्स हो गए, एआई वर्क स्टेशन हो गए, जो पूरा हाँ। वर्क स्टेशन बनाने में हेल्प करके देता है। इट्स नॉट अ सिंगल कंप्यूटर, हाँ, बट यू विल नीड पूरा एक वो मल्टीपल सर्वर वायरिंग सब ecosystem you पूरा will need. चाहिए। हाँ, तो दैट इज वेयर नेटवेब हेल्प्स। तो तो आई थिंक नेटवर्क बनाता है ये चीज या असेंबल करता है? असेंबल करता है। हाँ, तो बेसिकली अगर ऐसी हाँ, कंपनी तो इंडिया में होती नहीं, तो बेसिकली Okay. नेटवेब ये सब सेम आउटसोर्स करवाता है अपना Okay. मैन्युफैक्चरिंग वो लेकर, उसका एक्सपर्टीज भी असेंबली में है। हाँ, ओके। तो वो है, तो दैट इज देयर। तो आई थिंक ये है, एंड बिकॉज ऑफ दिस, और जैसे ये बीच में इतना रिसेंट एआई बूम आया,
सब आया। आई थिंक इन द लास्ट 3 years फ्रॉम FY21 to FY24 कंपनी के रेवेन्यूज कितने 5x हो गए, फ्रॉम आई थिंक अराउंड 80 to हाँ 90 odd मतलब crore टू अराउंड कितना, so revenues, sorry, not 5x, I think revenues have been 9x, ओ sorry 5x गलत था, 9x from almost around 90 crores, 80-90 crores to 750 almost crores in FY24। क्रेजी। हाँ, तो मतलब दिख रहा है क्लियरली कितना डिमांड है, कितना हाँ, बूम आया है I एआई think this का। is after the launch of OpenAI maybe. It हाँ, seems that the events are coincided with तो that. बेसिकली आई थिंक कितना FY2021 में आया था ना ओपन At least एआई। the early हाँ, version, not the ऑब्वियसली solid नॉट version दिस, that बट हाँ जो रूडिमेंट्री वर्जन उनका जो छोटा yeah. निकला था वो आई थिंक FY21 के आसपास आया था। Hmm. एंड उसके बाद से अगर देखें एग्जैक्ट वही टाइमलाइन बैठा है इसके ग्रोथ का भी, Hmm. दैट इज Hmm. देयर। तो But हाँ, I think उसमें what Netweb did differently because companies like Dell and all वो भी है, तो हाँ वो they are लोग भी तो yeah हार्डवेयर exactly प्रोवाइड Dell करते और हैं। हाँ, IBM भी है. So I think what Netweb does differently is they're also into custom built approach. So rather than providing standardized solution to all their clients, they take the requirements of the clients because again AI is a very vast area right now. It can be used in multiple industries. So ट्रू, अग्रीड। yeah, so in the standardized model, that is the limitation. That for if you design that particular model for one industry, it may not be that much useful for the other industry. That's why they taken this custom built approach where they design and integrate what the customer's requirements are according to that particular system, which is a high performing computer and the workstation that we just decided. तो बेसिकली हाँ, वेरी सिंपल कस्टमर स्पेसिफिक अप्रोच उन्होंने यूज दैट्स वाई किया। उनकी प्रेजेंस हाँ, भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे एआई तो है ही, एआई रिसर्च जो बोलते हैं हम, प्लस अपार्ट फ्रॉम देम डिफेंस में दे आर हेल्थ ऑल्सो केयर में भी होंगे हेल्थ ये केयर लोग में बिकॉज ऑफ आजकल कोर्स वो या बहुत यूज होता है AI वहाँ exactly telecom में also there, so these are very different पे। different sector. This also provides a very good sector diversification from a company's point of हाँ, view. कि अगर एक जगह को डाउनटर्न आया या थोड़ा Exactly. भी स्लो डाउन And आया, देयर anyway, आर I अदर mean, सेक्टर्स टू if a कैच अप। company is a extremely high growth business segment, industry diversification does not come into picture that early. But even considering that they are positioning from that well in that early stage, which is a very good thing विच for इज the वेरी company गुड because I think साइन। going forward, when the scale will arrive, that will be really helpful. And I think this is where I think Nvidia has been very crucial part in this whole journey because there has been a Nvidia का GPU use होता है basically the उसका आई थिंक graphics. मोनोपोली भी है ना पूरे Yeah, वर्ल्ड में, कि आई थिंक ऑलमोस्ट सारे I जितने think भी in जीपीयू GPU वीपीयू ये making, सब। हाँ। the competitors are at least 10 years behind in हम्म। Nvidia in terms of that. So Intel, people had a high hope from Intel. Intel will also do something like that. But I think they did something which was कंप्लीटली रॉन्ग। completely. So उसके बाद I think उसके बाद Nvidia का स्टॉक और बढ़ा और बता कि हाँ because भाई Nvidia ने अच्छा किया इसलिए नहीं. किसी और ने बुरा किया इसलिए। But I think because of that, key enabler is Nvidia. That is the key link between this network तो providing this solution to that. Yeah. बेसिकली जस्ट टू सम इट अप, एनवीडिया जीपीयू जो चिप्स बनाता है, दो जो चिप्स यूज होती है वो कंप्यूटर्स में, बिकॉज दो चिप्स इटसेल्फ वही है, प्रोसेस करते एनवीडिया डेटा चिप को। से ही हो सकता है ये काम ठीक है। राइट नाउ, इसके बिना हो ही नहीं सकता. हाँ, सो बेसिकली तो नेटवेब इज द की सोल इंडियन पार्टनर आई थिंक Yeah, ऑफ एनवीडिया। yeah, तो exactly. एनवीडिया बेसिकली नेटवेब को चिप्स देता है, नेटवेब यूजेस दोस चिप्स इन इट्स computers, Supercomputers. supercomputers, Yes. and then it in turn gives those supercomputers to the end user हाँ, industries, ये हो गया। बट what's interesting about this fact is also that नेटवेब ने एक एरावत करके, अभी आई एम नॉट श्योर हाउ इज इट प्रोनाउंस्ड, एरावती है. एरावती है ना, हाँ, तो एरावत करके एक एआई सुपर कंप्यूटर है विच इज इंडियाज मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, एंड वर्ल्ड में टॉप 100 में कहीं उसका रैंकिंग आता है। That is a good thing. एंड दैट इटसेल्फ वाज मेड थ्रू द हेल्प ऑफ एनवीडिया का कोई एक A100 टेंसर कोर जीपीयू आता है, उसके हेल्प के थ्रू एनवीडिया नेटवेब ने So ये even if बनाया था। assembly sounds like a too basic thing, there is some engineering behind that as well. Because ऑब्वियसली यार, otherwise अगर ये हाँ, tensor GPU use करके हो जाता, तो every कोई भी PC कर would have सकता been था, top 100, right? Why this particular is बट the देन top आई थिंक 100? देयर इज सम सॉफ्टवेयर प्ले Yeah, एज वेल software play and the way the your architecture is built बिल्ट। on that particular thing. So I think ऐसे 300 सुपर कंप्यूटर्स और 4000 से ज्यादा एआई वर्क स्टेशन ऑलरेडी डिप्लॉय ऑलरेडी कर डिप्लॉय चुका कर है. चुकी है एंड नेटवेब। हाँ, नेटवेब सॉरी या. हम्म, सो मतलब दैट टेल्स यू दैट इट इज नॉट वन ऑफ, कि they have क्रेडिबिलिटी है मार्केट में correct इनके पास, correct and they have done it for multiple clients at मल्टीपल multiple क्लाइंट्स। places. And I think but यही हो गया ना, अभी क्या हुआ,
एआई सुपर कंप्यूटर जीपीयू की वजह से चढ़ा, और जैसे ही उस सेक्टर को कोई खराब न्यूज आई उतना टूटा भी। टूटा भी, तोड़ तो भी दिया। हाँ, तो अब उसको एड्रेस करने के लिए कंपनी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर ही रही है। So what company is doing, I think it is venturing into telecom and data center, because that industry is also around some 10,000 crore. This is the 5G opportunity that we 5G, see. हाँ, Yeah, for 5G 5G. alone itself is 10,000 Yeah. crores, हाँ. So there is also companies manufacturing critical components like 5G ORAN and network switches. तो बेसिकली आई थिंक दीज, ये मैं समझा था एकदम हाँ, ऐसे ब्रीफ में कि ये जो 5G हो रहा है होता है, ये बेसिकली हेल्प करता है कि जो 5G नेटवर्क जो रोल आउट करना होता है सब कंपनीज को, वो कितना इजीली ये लोग प्रोसेस कर पाए डेटा, उसका डेटा उसमें ये 5G हो रहा है, नेटवर्क स्विचेस हेल्प करते हैं. got it. So the अगेन company with हार्डवेयर the ही है. highest fast हाँ speed will have an edge over the हाँ. competitor, basically. Okay, got it. So I think again that also aligns with India's 5G rollout जो हो रहा है अभी. चालू हो गया हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ. तो that बट उसमें स्टिल भी इन there is a डिसेंट चेंजेस, competition हाँ. कि हम पहले. But I think this is company जिसके बैकग्राउंड में काम कर रही है will be the ultimate beneficiary of बेनिफिशियरी, हाँ यार. whoever wins. तुम करो भाई, जिसको जितने 5G डालने, Selling shovel in gold मैं rush. बैठा हूँ, हाँ, Yeah. देने के लिए. So yeah, so that is basically the story. AI high growth segment. Companies present in that particular segment. डाइवर्सिफाई कर रहा है. Diversify is also in place, and I think looking at the company's current business segment, and all are high growth. So that's I think why the company's growth that we are seeing in the stock price, they're also reflected. But I think what other things reflected was the numbers part also. नंबर्स, हाँ, कि भाई किस Hmm. पर्टिकुलर ये जो आगे जाके हाँ, ग्रोथ ड्राइव करेगा as you कंपनी के लिए. mentioned कि FY21 के बाद 9x तो revenue हो गया था. हम्म, But I think in that particular after that growth, I think currently this computer part that we discussed, that is 36% of the business. Other 37 is private cloud. प्राइवेट क्लाउड, एंड अगेन प्राइवेट क्लाउड Yeah, वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब जैसे हाँ, इंडिया का रिक्वायरमेंट भी ना कि कंपनीज अपना सारा hmm, डेटा इंडिया में स्टोर करे, correct. एंड पब्लिक सर्वर्स में तो कर नहीं सकता. तो हर You have कंपनी to, को yeah. विल हैव टू हैव इट्स ओन क्लाउड नेटवर्क. Cloud is basically a system where you store the data part, basically. So तो बेसिकली हर simplification. कंपनी को अपने लिए एक प्राइवेट Yeah. नेटवर्क के सर्वर चाहिए, Hmm, तो उसमें भी नेटवेब है. correct. एंड वो आई थिंक इतना 37% कुछ करता है हाँ, so अभी. that explains almost 70% of business, 70% ऑफ द and बिजनेस. other 11% is from a pure AI system and workstation वर्क business. स्टेशन Yeah. सिस्टम So हो गया. computer is 36%, the particular, हाई परफॉर्मेंस yeah, कंप्यूटिंग and 36, the workstation is 11%. 11%. Yeah. बाकी फिर देन वो डेटा सेंटर के जो सर्वर्स हाँ, हो गए या स्टोरेज यूनिट्स हो गए, exactly. वो सब में भी है. Hmm. बट देन अगेन दोस कम इन सिंगल डिजिट्स. Very few. हाँ. हाँ. बट नाउ द मेन कैच इज, जो जिसके ऊपर स्टॉक भागा इतना, Hmm. वो अभी आई थिंक इतना कुछ 11% है. इट इटसेल्फ इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट अ कैगर ऑफ 49% ओवर द पीरियड ऑफ FY24 टू FY27. एंड Okay, वो the next 3 अभी, years. हाँ, इन द नेक्स्ट 3 इयर्स वो पर्टिकुलर सेगमेंट कुछ 49% से ग्रो करेगा. एंड फ्रॉम करंट 11% कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि एआई जो वर्क स्टेशन पार्ट है, एआई रिलेटेड जो भी उनका रेवेन्यू है, इट रीचेस टू 20% ऑफ देयर FY27 रेवेन्यूज. Got it. So this is just the workstation part, right? हाँ, उनका HPC तो है ही. I एचपीसी think है that ही. is also projected around 40-42% हाँ, CAGR. वो भी ग्रो So कर रहा both है. 40% हम्म. above. Okay. Hmm. बट Got it. इसका ग्रोथ आई थिंक एआई जो रिलेटेड रेवेन्यू जो दैट इज सपोज टू बी ग्रोइंग एट द हाईएस्ट रेट अमंग ऑल देयर बिजनेस सेगमेंट्स. Hmm. And all other are also not, मतलब ऐसा कम नहीं है. ऐसा कम नहीं They are also growing at 42%, 42%, 36% 36%. सब Yeah. है. बट Hmm. देन एआई हैज द लीड राइट नाउ. Hmm. And I think that explains that why the revenue share of that particular segment is also increasing in हाँ, the total revenue pie. Got वो it. है. Hmm. बट देन ऑल्सो एट द सेम टाइम देयर इज दिस कंसर्न के भाई अरे, बट कंपनी के मार्जिन अराउंड कुछ 16% थे FY23 में, Okay. और अभी FY24 में केम डाउन टू 14%. बट Hmm. देन उसका भी रीजन था, सो बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट, ये क्या, सॉरी, नेटवेब जो है वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए काम नहीं करता, उनके एंड यूजर में अपने गवर्नमेंट भी बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट करवाती Yeah. है. तो आई थिंक वो सब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत सारे मिले थे बीच में नेटवेब को. Because उनके प्रोडक्ट ऐसे ही है हाँ, जो रिसर्च में काम आए, and I think government is also one of the very biggest एंड वो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो लो मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड बीच में कंपनी गवर्नमेंट ने, को टेंडर हाँ, है. वही, तो Yeah. वो प्रॉब्लम रहता है. एंड देन साथ में टू डेवलप सच प्रोडक्ट्स Hmm. R&D भी बहुत लगता है, तो Yeah. वो पीरियड में इन्वेस्टमेंट भी किया था उन्होंने Hmm. टू That is a डेवलप very बेटर crucial प्रोडक्ट्स. part हाँ, of any tech focused company, at least in the
new age tech. newish tech. Okay. So because of these for 2 or 3 problems, उनके margins गिरे थे. But now Problems I wouldn't say. I problems think these नहीं है, are long term actually investment investments also. for future. Because अगर तुझे revenue growth आ रहा है, so you won't say no to it just because government is giving it to you. You at the end of the day you want the revenue, right? So you will take like a tactical call in a business manner. Obviously कि हाँ चल मैं अभी थोड़ा Yeah. पेन इंडर कर लूंगा, but आगे जाके मेरे को इसमें अच्छा growth दिख रहा है. Exactly. So that is what And will once the happen company again. will have a good order book from the private player, government they might have the liberty to say no to going forward. But And again, then हाँ, that is अगर a private का very mix future. बढ़ना चालू हो गया, हाँ, अच्छी exactly. बात है. So that is also there. Correct. And I think the IT companies are famous for their asset light model also, right? So this also is no different than other companies also. They just focus on design and assembly, but manufacturing, as you said, they outsource it. So that has also reflected in the return ratios of company because you don't have to have a in-house plant machinery and all those things. Of course, assembly करने के लिए चाहिए, but not for the manufacturing, which is actually very heavy machinery. So उसकी वजह से I think ROC is also very healthy at 38%, which That's is good, हाँ. very very impressive. And I think post the company's IPO back in July 23, which is I think 1.5 years ago, the company has cleared all its debt. So 630 crore was IPO, around 400 was OFS, and the other 250 was the fresh issue. So post that, I think the company has cleared all the debt, and I think the as of FY24, company has around 22% of the revenue as cash only, Cash. which is 220 crore in terms of numbers. So that also explains that if let's say company wants to do any heavy R&D projects, so company has a good cash. R&D हो गया. And to be honest, ऐसा मेरे को ये भी लगता है कि यार acquisition भी आराम से कर सकता है कंपनी. Yeah, if there क्योंकि any ये खुद हाई ग्रोथ में है, and there are so many startups जो इसके अंदर है, तो exactly. just to increase their dominance in a particular sector या just to get acquire ऐसा कोई नया capability जो इनके पास नहीं है और टाइम लग सकता है maybe not develop the करने company में. but the tech. हाँ, at least वो tech खरीद सकते Exactly. हैं. Correct. So with this, it provides a good headroom for those kind of activities as well. So that is all. But problem है जिसकी वजह से सर्विस गिरा था स्टॉक वैल्यूएशन. तो वैल्यूएशन क्या है, स्टोरी तो समझ गए, वैल्यूएशन क्या है. तो आई थिंक यही मैंने एक रफ ऐसा कैलकुलेशन किया था जस्ट टू सी कि नाउ आफ्टर द फॉल कितना दिखता है, बिकॉज इट कुड बी बिफोर द फॉल आई थिंक इट वाज अराउंड 70-80 टाइम्स आराम से, वन ईयर मतलब 80 फॉरवर्ड, इवन हायर देन दैट. 1 year forward उसके अभी इट इज एट आई थिंक अराउंड 50-51x. Okay, definitely not cheap. Not cheap, but not expensive like it Considering was before. considering the high growth nature of the industry that the company is. तो basically problem यही हो जाता है ना, we can't really always say put a number to it. surety कि भाई यार ये बहुत expensive है. उसका रीजन भी यही है ना, कंपनी खुद ऐसे सनराइज इंडस्ट्रीज के अंदर है जो खुद इंडिया में इतने पेनिट्रेटेड नहीं है. And there are no direct competitor as of now to compare with. मतलब लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन नहीं है. तो वो एक प्रॉब्लम आ जाता है. यू कांट रियली गिव इट अ टैग सेइंग यार ये नहीं है, ये पक्का एक्सपेंसिव. इवन वी हैव सच लेट्स से ग्रोथ नंबर कंपैरेटिवली एनालिसिस हो गया या तो ऐसा कुछ हो गया, वी कैन डू. बट अगेन दिस कंपनीज ऑलवेज has the tendency to surprise on the upper side. अब जैसे so then in that case you will might feel that कि महंगा करके लिया नहीं, बट वो हमेशा सेम नंबर डिलीवर करते जा रहे हैं और मार्केट उसको वो वैल्यूएशन देते ही जा रहा है. Exactly. What you lost is then it's your opportunity cost basically. But again, I think so. We're not gonna, of course, I'm not gonna tell you. It's just an education perspective. But I think an investor can gauge a fair idea of how to value a company like this, which is into a high growth, high investment sector. Because I think government is also doing a lot of investment and supporting companies in this particular. हाँ यार वो यही को लेके push तो काफी कर रहा है. हाँ. Plus the 5G that the company 5G has. rollout. As of now, there is no particular revenue coming from the telecom sector, but I think that is also expected to grow around 5 to 6% of the business in from FY27. 0 to 5 to 6%. Yeah. That is good. That is also good. Yeah. But again, high growth segment that there is also. So across the segment that the companies, it's not just a singular segment. All the company segment are high growth. So according to that, I think an investor can fairly gauge the valuation scenario by themselves. So, but the growth potential looks very good. But I think so the company, very high performance computing demand is there.
I think export also has around 8% of the revenues. Around 8%, Yeah. and I think currently company वो Middle East maybe they are trying to expand by entering those markets also. Yeah, I so think possibility that is वो है also very good. कि अगर export बढ़ गया तो हाँ, Indian market पे export is also again very हाँ high margin in terms of comparatively. better Better margin. realizations Okay. मिल सकते हैं Yeah. company को. Yeah, So and I think that is there. yeah, so companies I think ability to innovate, considering that they're investing heavily into R&D and all. So long term में that is also going to help it. But I think it's opportunities and challenges go hand in hand. So I think challenges are also there because And obviously every yeah, investor should also look at both the things before correct, considering. correct. So the biggest what we just saw, I mean, live है कि reliance on Nvidia's GPU makes it vulnerable to Supply chain disruption, exactly. हाँ. कल जाके इवन Nvidia का मन भी बदल गया कि we don't want to supply. So there is no या अगर वो टैग भी हट yeah. जाए कि सोल पार्टनर एनवीडिया का इंडिया में Yeah, नेटवर्क even है though they कोई counted to हाँ supply this, but someone else is ऑयल developing. ऑल्सो गेट्स तो Yeah, सप्लाई वहां से भी कम तो हो ही जाएगा तो exactly. डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मार्केट के अंदर. And of course, the global companies are currently not in this same. I think what we just talk about the competition, but they also might anytime come and they can increase the competition, which could not potentially degrow their revenue, but it can hurt profitability. That ऑब्वियसली is हाँ there. यार अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे बात आ ही जाता है. एंड देन आई थिंक व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनीज, आई थिंक अपनी जैसे पहले बात हुई थी कि कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, सिर्फ उसका मेन काम असेंबली है. Yeah. तो उसमें इट बिकम्स इजी फॉर देम टू एग्जीक्यूट देयर ऑर्डर्स वेरी क्विकली. Okay. अब उस चक्कर में क्या होगा कि ये ऑर्डर बुक उनको है ना कंटिन्यूस इफ दे वांट देयर ऑर्डर बुक टू ग्रो, क्योंकि आई थिंक एग्जीक्यूशन साइकिल उनका कुछ 8 वीक से 16 वीक्स का ही होता है. Okay. So 2 to 4 months. हाँ 2 to 4 months तो मतलब दैट इज वेरी क्विक Very कि good. भाई Yeah. हाँ बस असेंबल किया So you करके दे need दिया a पूरा. तो considerable amount of order ऑर्डर book to बुक have एट the ऑलवेज कि भाई हाँ कंटिन्यूस चलता रहे ताकि हम लोग visibility रहे जैसे revenue. रेवेन्यूज बुक कर रहे हैं वैसे फिर मेरे पास आगे भी मेरे को ग्रोथ दिखे कि So नहीं यार anytime अभी that है मेरे link might पास. stop, it can hurt the growth अगेन फिर वो numbers. दिख सकता है हाँ कि अगर जैसे ही थोड़ा ग्रोथ टेपर हुआ आगे High growth में तो हाँ ज्यादा दिखता है because it's वही. yeah. तो ये Yeah. चैलेंजेस भी अपने को ध्यान में रखने And I think पड़ेंगे. what you mentioned also that company outsource its manufacture. So that also dependability is there. That anyone can, there might अगर be any problem, right? Unforeseen problem that is there. तो ये है मतलब हाँ इन शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज भी है चैलेंजेस भी है. नाउ इट्स अप टू द पीपल Yeah. हु वैल्यू द कंपनी के But भाई मतलब definitely, किसको वेट ज्यादा देना है कैसे क्या definitely a रखना है. very interesting company इंटरेस्टिंग because, कंपनी. यस as we said, there is no clear competition, and it's not just I think AI. Of course, AI is there and very big part of the business. But I think that other business that you mentioned, that 5G thing and all those things, that will also something look out for again in future, but something to look out for. And I think yeah, the challenges like execution, competition वो will सब तो always be रहेगा there. ही Yeah, मतलब but I think overall it seems a very प्रॉमिसिंग good, स्टोरी. yeah, good story. And I think that is what our framework is also have been always at Rupeeting, that we try to decode investments or focus multivalues on the through their story कि भाई and see that numbers valuation are backing it or not. So I think if you guys also want to learn more about it and be a part of this particular framework, you can always check out our small cases. Links are in the description. yes. And I think with that, that's a wrap for this week. We'll see you guys in the next one. And until then, have a good one. Bye bye. And don't forget to like, share and subscribe. Yes, Sorry. like, share, and Bye. subscribe. Bye.